दीदी जी सादर प्रणाम। रमो दीदी जी सादर प्रणाम। ठीक है दीदी जी, आप म्यूट करके रख दीजिए, आप जो है कुछ ना करिए। ठीक है दीदी जी, ठीक है, आप बस ऐसे रख दीजिए। बस आप जो मेहमान आए हैं उनका स्वागत करिए। ठीक है दीदी, ठीक है।
दीदी आपके यहाँ मेहमान आए हैं तो आप अपना काम करिए, परेशान मत होइए। राम राम दीदी जी, राम राम।
धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारी लाइव में स्वागत है भैया। लाइव में आए हो तो लाइक डन कर दो साहिबलाल भैया, दिल से धन्यवाद मेरे भाई। लाइक डन कर दो भैया जी। साहिबलाल भैया अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो लाइक डन कर दो। क्यों नहीं बोल सकते हो भैया? बोलो बोलो, जो आपके मन में है सब कुछ बोल सकते हो। कोई प्राइवेसी नहीं है, जो आपके मन में हो सब कुछ बोल सकते हो भैया। क्या बोलना चाह रहे हो भैया? नहीं भैया, मैं कहाँ गुस्सा तो मैं करती ही नहीं हूँ भैया। ये आप पहले और आखिरी व्यक्ति है जो आपने बोला कि मैं गुस्से में बोली थी। मैं गुस्से में नहीं बोली थी भैया। लाइफ में ढेर सारे लोग रहते हैं ना, तो कभी कभी जब ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। बाकी मैं गुस्से में कहाँ बोली थी, मैं बताई तो थी भैया। आपसे पहले भी वो ट्रेबल्स भैया आए थे, पूछे थे ना, तभी मैं भी बताई थी। मैं बताई तो थी भैया कि मैं यूपी इंडिया से हूँ। आप जौनपुर से हैं, मैं प्रयागराज से हूँ, आपके बगल से ही हूँ। प्रयागराज संगबेरपुर से हूँ भैया। गुस्से में कहाँ बोली थी, नॉर्मल ही तो बोली थी। गुस्सा मेरी आदत ही नहीं है भैया, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। और फिर गुस्सा किसको नहीं आता है? गुस्से वाली बात होती तो गुस्सा आ जाता, बाकी नॉर्मली ऐसे हर बात पे गुस्सा नहीं करती हूँ। ये देखो रमो की रसोई दीदी आई है, इनसे पूछो मेरा नेचर। ये मेरी दीदी है। दीदी ये भैया आए हैं, बोल रहे हैं कि आप मुझसे गुस्से में बात की थी। वही मैं बोल रही, भैया मुझे गुस्सा तो आता ही नहीं। मैं तो बहुत ही नॉर्मली बात करती हूँ। और कुछ पूछना है भैया? श्री कृष्ण हरे कृष्ण, श्री कृष्ण हरे कृष्ण, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ ना सब लाल जी। ऐसी महिला आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। इतनी सीधी महिला को ये कहना कि गुस्से में बोली थी, बात हजम नहीं हुई। ऐसी महिला जो देवी स्वरूप है। भैया दीदी का कमेंट पढ़ लो, दीदी देखो क्या बोल रही है मेरे विषय में। दीदी आपसे तो मेरी सिर्फ लाइव में बात हुई है। जो मेरे अपने हैं, मेरे खास हैं, मेरे घर के लोग हैं, वो भी यही बोलते हैं। और तो और किसी की देवरानी जेठानी और भौजाई नहीं बोलती, वो भी यही बोलती हैं। अधिकतर देवरानी जेठानी और भौजाई उल्टे सीधा बोलती हैं।
श्री कृष्ण गोविंद है। जब आपके लिए सब महिलाएं देवी का रूप है, तब आपने कैसे कह दिया कि गुस्से में बोली थी भाई। हो सकता है दीदी भैया को ऐसा लगा हो। कभी कभी क्या होता है ना दीदी, जैसे ढेर सारे कमेंट आते रहते हैं तो ऊंची आवाज में बोलना, जल्दी 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 फटाफट जब पढ़ो ना, तो भैया को ऐसा फील हुआ होगा, ऐसा महसूस किए होंगे भैया कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ। बाकी भैया मैं गुस्सा नहीं करती, मेरी गुस्सा करने की आदत ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे नहीं दीदी, आप इतना, आपको हम आदर्श मान रहे हैं। राम राम गुड़िया सिस्टर, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, आप मेरी लाइफ में आई। दिल से धन्यवाद मेरी बहन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरी प्यारी बहन, राधे राधे भैया जी। दीदी क्या लिखे हैं? राधे राधे भैया जी, राधे राधे। दीदी जी राधे राधे, गुड़िया सिस्टर राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए जाए विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राधे राधे भैया जी। लाल भाई आवाज तेज है शायद, तो हो सकता है आपको लग गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आरती बहन बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। जय श्री राम, जय श्री राम। हम सबके लाइव में जाता हूँ, सबका सपोर्ट करता हूँ। हमारा कोई चैनल नहीं है, लेकिन अपने घर की महिला और अपने घर की भाभी बहन समझता हूँ। भैया सब अपने ही घर की हैं, सब अपनी ही बहन हैं। हमारे रामचरितमानस में साफ साफ है भैया। कोई बात नहीं। थैंक यू आरती बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती बहन आपका कोई चैनल है कि बस ये भैया की तरह? क्या नाम है भैया? साहेब लाल। साहेब लाल भैया की तरह आप मेरा सपोर्ट कर रही हैं बहन, कि कोई चैनल है आपका? क्या कर रही हो? बस ऐसे अपने सभी भाई बहन से बातें कर रही हूँ। और आप क्या कर रही हो बहन? आप भी इस समय मुझसे बात ही कर रही हो। और खाना वाना हो गया आप सबका, भैया बहन सबका? साहेब लाल भैया भोजन हो गया आपका? आरती बहन भोजन हो गया आपका? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पाणी। थैंक यू दीदी जी, तीसरी आईडी से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। गुड़िया सिस्टर हमको लगता है चली गई हैं। नीचे मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए मैं ऊपर आ गई हूँ, छत पर हूँ। एक चटाई डालकर ऊपर ही लेट गई हूँ, दरी डालकर।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पाणी। सभी भाई बहन चले गए क्या? इस समय जीरो की वाचिंग कर रही है और कमेंट भी नहीं आ रहा है किसी का। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पाणी। एक तो पता नहीं का हो जाती जब जीरो के वाचिंग शो करे लागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पाणी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सिया मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पाणी। जिए बिनु देहि न दिए बिनु आरी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद संभारी। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी सादर प्रणाम। हाँ दीदी हमको पता है कि आप हैं, अभी गई नहीं हैं। इंदू दीदी जी सादर प्रणाम। दीदी जी आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं स्वागत क्यों नहीं करूंगी दीदी जी, आप आएंगी आप मेरे घर, मैं आपका स्वागत क्यों नहीं करूंगी। दीदी जी सादर प्रणाम। दीदी दीदी जी की आईडी का नाम है मैं इंदू के गीत हूँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा? वेलकम माय सिस्टर। दीदी जी आपका स्वागत है। हाँ दीदी 8:31 पर आई हूँ। जिय बिनु देह नदी बिनवारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये सोलर सिस्टम लगा, ऐसे लग रहा है जैसे गांव में घास फूस वाली झोपड़ी नहीं होती। जिए बिनु देह नदी बिनवारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह नदी बिनवारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दीदी आपके यहाँ जब गेस्ट आए हैं, रिश्तेदार मेहमान आए हैं, तो आप काहे परेशान हो रही हैं? आप अपना काम करिए। रमो दीदी आप अपना काम करिए, घर में आदमी आए तो अच्छा नहीं लगता। उनको लगेगा हम इनके यहाँ आए हैं तो ये अपना लाइव में लगी हुई हैं, और काम भी ज़्यादा हो जाता है। आपके पास तो वैसे भी अभी आपके पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, वैसे बहुत सारी जिम्मेदारी है, ढेर सारा काम रहता है। मेहमान आ गए हैं तो और एक्स्ट्रा में वर्क हो गया होगा।
सो तुम जानहु अंतर्यामी पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अरे दीदी, कितनी बार आपको बोले कि आप परेशान मत होइए, आपके यहाँ जब गेस्ट आए हैं तो आप उनका ध्यान दीजिए। कोई सामने से आता तो उसको अच्छा भी नहीं लगता कि इनके यहाँ जाओ तो जब देखो तब ये लाइव में ही लगी रहती हैं। सामने नहीं बोलते लोग, पीठ पीछे बोलते हैं ऐसे। आप मोबाइल रख दीजिए, बस आप अपना काम करिए। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर युग पाने। सो तुम जानहु अंतर्यामी। अरे दीदी, कह रहे हो कमेंट मत करिए। कोई घर में आता है तो उसको देखने में भी नहीं अच्छा लगता। सामने नहीं कोई कुछ बोलता, लेकिन पीठ पीछे कहे कि भैया उनके यहाँ जाओ तो उनको बात करने की फुर्सत नहीं है। जब से यूट्यूब क्या चलाने लग गई हैं, सारा दिन लाइव में ही लगी रहती हैं। तरह तरह की बातें करते हैं लोग। इसीलिए बोल रहे हो मोबाइल चुपचाप से रख दीजिए और जो है आप अपना काम करिए। मैं तो गेस्ट की बात जाने तो मेरे यहाँ तो मेरे पति देव ही अपना मोबाइल नहीं लगाते हैं। कहते हैं मैं बस दोनों लोगों ने ना, मेरा लड़का देता है अपना मोबाइल ना पति देते, कहते हैं अपना पुराना मोबाइल दे दिया, बस उसी में जो करना हो करो। मेरा लड़का बोलता है मम्मी जिसके पास जितना हो जाता है उसको और उसकी इच्छा बढ़ने लगती है कि और हो जाए मेरे पास। उसका तो लॉक कैसे खुलता है मुझे अभी तक कोई उसका पिन कोड ही नहीं पता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ संहारी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, आपका स्वागत है हमारी लाइव में।
सुमन बहन, मैं उस टाइम ये बोल रही थी कि बहन मेरे पास मोबाइल तो 3 है, मैं आपकी वॉच टाइमिंग बढ़ा सकती हूँ, आपका सपोर्ट कर सकती हूँ, आपकी वीडियो वॉच कर सकती हूँ, लेकिन मैं कमेंट नहीं कर सकती। कमेंट के चक्कर में पूरा दिन पूरी शरीर दर्द होने लगती है, क्या बताऊँ, आँख दर्द करने लगती है, सर दर्द करने लगता है, हाथ दर्द करने लगता है, पीठ दर्द करने लगती है। पूरा दिन सुबह से शाम तक लाइव का चक्कर काटो तो मैं मोबाइल ऑन करके तो सपोर्ट कर देती हूँ, लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ। मुझे वैसे भी बहुत वीकनेस फील होती रहती है, तबीयत भी इधर खराब चलती रहती है। आजकल तो गाना भी नहीं गा पाती हूँ, हाँफती रहती हूँ गाना गाने में। यही बोल रही थी बहन। और मैं अपनी किसी बहन को विवश भी नहीं करती हूँ बहन कि आप कमेंट करिए, आप अपना काम करिए, मोबाइल ऑन करके रख दीजिए, आप अपना काम करिए, मेरी वॉचिंग बनती रहेगी। ना मैं किसी की लाइव में कमेंट कर पाती हूँ और ना अपनी लाइव में कमेंट करने के लिए विवश करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी जितनी बहनें सब हाउस वाइफ हैं, सबके पास काम रहता है और सभी बहनें परेशान रहती हैं। मैं सबके ऊपर भरोसा भी करती हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ और सामने वाले के ऊपर भरोसा भी करती हूँ। हाँ हाँ, बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। जब तक मोबाइल ऑन रहेगा उतना वॉच टाइम आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लाइक की हो बहन कि नहीं की हो, सुमन बहन अगर लाइक न की हो तो लाइक डन कर देना बहन, अगर कर दी हो तो कोई बात ही नहीं। राम राम बहन, राम राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है बहन। अच्छा, 8वां लाइक हुआ नहीं, मेरे मोबाइल में भी ऐसे प्रॉब्लम है बहन, लाइक एक एक आईडी से लाइक नहीं जाता है, लाइक मिला नहीं। आप अपना मोबाइल एक बार अपना यूट्यूब अपडेट कर दीजिए, आपका लाइक नहीं मिला है। मेरी भी एक सिम है, जब उससे लाइक करती हूँ तो लाइक नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन शिव शंभू सिस्टर। हाँ, लाइक मिल गया है बहन। सुमन बहन, आप ऑन करके अपना काम कर लीजिए, बीच बीच में बस कमेंट दे देना कि हाँ मैं बनी हूँ लाइव में। थैंक यू इंदू दीदी जी, थैंक यू रम्मू दीदी जी, थैंक यू सुमन बहन, थैंक यू शिव शंभू सिस्टर, थैंक यू। मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी दीदियों को भी धन्यवाद। राम राम सुमन बहन, राम राम।
सुमन बहन, अब आजकल विनोद भैया लाइव नहीं करते क्या? हमको लगता है चैनल छोड़ दिए। सुमन बहन, मेरी आवाज जा रही हो तो बताओ, विनोद भैया लाइव छोड़ दिए क्या? चैनल ही छोड़ दिए क्या? ना वीडियो डाल रहे हैं ना लाइव कर रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं आजकल। नहीं हो सकता है मौसम परिवर्तन से तबीयत ना खराब हो। आजकल तबीयत भी तो बहुत खराब हो रही है सबकी। नहीं करते बहन, मुझे नहीं पता, लाइव करते तो दिखता। हाँ, ना लाइव ही कर रहे हैं और ना जो है वीडियो ही डाल रहे हैं। हमको लगता है छोड़ दिए। क्या करे, आदमी तंग हो जाता है लाइव वाइव के चक्कर में। शिव शंभू सिस्टर धन्यवाद। सुमन सिस्टर राम राम। रमो दीदी राम राम। मेरी सभी दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सभी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दीदी, आप परेशान मत होइए। आप बताओ, आप अपनी जितनी आईडी हैं सबसे कमेंट कर रही हैं बार बार। आप अपना काम करिए दीदी। रमो दीदी, आपको बोल रही हूँ। आपके पास ऐसे इतनी जिम्मेदारी है, ऊपर से गेस्ट भी आए हुए हैं, आप कमेंट ना करिए। राम राम सुमन बहन, राम राम। राम राम सुमन बहन, राम राम। सुमन बहन, आपको भोजन न बना हो तो बना लीजिए बहन। सुमन बहन, भोजन बना कि नहीं बना अभी? तो बना लीजिए बहन, काहे परेशान हो रही हो? बना लीजिए बहन, पता चला लाइफ के चक्कर में घर में कलह हो जाए। मोबाइल ऐसे ऑन करके रख दो, आप अपना भोजन बनाओ। ये समय ही ऐसा है बहन, इस टाइम सबका भोजन बनाने का समय रहता है, इसलिए मैं सभी बहनों को बोल देती हूँ कि आप मोबाइल ऑन करके रख दीजिए और अपना भोजन बनाइए। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी लाइफ के चक्कर में मेरी बहनों के घर में किसी भी प्रकार की कलह हो, और जो काम नहीं होगा घर में तो फिर लड़ाई तो होगी ही। पति बच्चे सब इस टाइम भूखे रहते हैं, और हम आप अगर लाइव लेकर बैठ जाएंगे तो फिर किसको अच्छा लगेगा? मैं दूसरे की क्या बात करूं, मैं अपनी खुद की लाइफ में कभी कभी आवाज तो सब लोग खा लिए, मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर। जब तक नीचे रहती हूँ मोबाइल की आवाज बंद करके रखती हूँ, कमेंट भी नहीं पढ़ती हूँ। मेरी जितनी बहनें हैं सब सपोर्ट करती रहती है, मैं किसी को जवाब भी नहीं दे पाती, बात भी नहीं कर पाती हूँ।
ठीक है सुमन भाई, आप अपना खाना बनाइए, परेशान मत होइए, मोबाइल ऑन करके रख दीजिए बस। भरोसा है बहन, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हमको आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर रिश्ते में विश्वास न हो तो रिश्ता किस काम का। तभी तो कह रही हूँ बहन कि आप भोजन बना लीजिए। फालतू पतिदेव ड्यूटी से आए होंगे, बच्चे भी भूखे होंगे। खाना पीना कितने बजे होता है सुमन बहन आपके यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप मेरी लाइव में आए, बहुत अच्छा लगा भाई। बीच में आप बहुत दिन तक नहीं आ रहे थे। जब मैं पहले दिन लाइव चलाई थी तो आप ही अकेले मेरा सपोर्ट किए थे। आज इतने सारे लोग जुड़ गए हैं भैया। आप जब पहली बार आए थे मेरी लाइव में, मुझे कुछ भी नहीं जानकारी थी लाइव के विषय में, क्या होता है कैसे होता है। अब तो धीरे धीरे बहुत जानकारी हो गई है। राम राम बहन, राम राम। मैं ठीक हूँ भैया जी, आप कैसे हो? चले गए क्या भैया? लाइक डन कर दो। अच्छा अच्छा, 10 बजे तक हो जाता। हाँ भैया, खाना पीना हो गया है। खाना पीना हो गया है, लड़का नीचे पढ़ाई कर रहा है भैया। मैं ऊपर आ गई हूँ छत पर, एक चटाई लेकर दरी दरी डालकर ऊपर छत पर लेट गई हूँ। और लेटे लेटे यहीं से सबसे सारे भाई बहन से बातें कर रही हूँ। आप लोगों का खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? आपका खाना पीना हुआ कि नहीं भैया? हाँ, लाइक मिल गई भैया आपकी। अच्छा, पाठक भैया की, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपका स्वागत है मेरी लाइव में। पाठक भैया, वो सुपर चैट वाली भी आईडी लगा दिया करो थोड़ी देर के लिए। दिवाकर भैया आपसे। पूनम बहन, 1 महीना मेरा भी। अच्छा, आ गई सुपर चैट वाली आ गई आईडी। हाँ भैया, लाइक हो गया। पूनम बहन, 1 महीना मेरा भी सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है दीदी, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है भैया? बोल तो रही हूँ भैया। अच्छा अच्छा, आपके मोबाइल में नेटवर्क कम है। अच्छा अच्छा भैया, वही तो मैं सोची, मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो बराबर बोल रही हूँ। दिवाकर भैया, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि
जब मेरा चैनल मोनो हो जाए तो आप सुपर चैट कर दिया करो भैया। ये दूसरी आईडी है क्या भैया? हाँ भैया, आपने लाइक कर दिया है। दिवाकर भैया, इस वाले से तो खूब बड़े बड़े जो कमेंट आते हैं सुपर चैट, आज हाथ वाले कमेंट आ रहे हैं। आप चैनल मोनो है? नहीं भैया, अभी तो हाँ हाफ मोनो है, हाफ हो गया है भैया। और आप सबका आशीर्वाद बना रहा तो बस 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। 80 घंटे बाकी हैं भैया अभी। वो पिछले 5 दिन का शो करता है ना भैया। आज जैसे 10 तारीख है तो 5 तारीख वाला शो कर रहा है, तो इस 5 दिन में वो पूरा हो गया होगा। चंदा के गीत सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। बहुत दिन हो गया आपके चैनल पे नहीं गई हूँ बहन, क्षमा चाहती हूँ। ये लाइव का चक्कर काटने के चक्कर में चैनल पे नहीं जा पा रही हूँ। बस 1-2 दिन में चैनल मोनो हो जाएगा तो फिर सबके उस पर जाऊंगी, चैनल पर जाऊंगी। अच्छा 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 भैया जी। अच्छा, आप ट्रेवल्स कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं भैया। हैप्पी जर्नी मेरे प्यारे भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसीलिए तो मैं अपने सभी भाइयों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब लोग भैया ड्यूटी भी करते हो और कितनी जिम्मेदारी रहती है, कितना दिमाग में स्ट्रेस रहता है, उसके बाद भी सपोर्ट करते हो। हाँ भैया, हाफ हो जाए तो इससे क्या होगा ना भैया, जैसे आप हाफ करवाएंगे, जैसे आप उसमें मतलब उस पर डालो तो किसी किसी का दो मतलब एक ही दिन में हो जाता है, 24 घंटे में हो जाता है। किसी किसी का कहते हैं कि 8-10 दिन लग जाता है, किसी किसी का 10-15 दिन लग जाता है चेकिंग होने में। तो अगर जैसे हाफ मोनो हुआ रहता है तो जैसे आपका वॉच टाइम पूरा होगा खट से आ जाएगा मैसेज। नहीं तो फिर आपका जैसे 4000 पूरा हो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर आपको समय लेगा उतना। ना ये जो कमेंट आ रहा है इंदू के गीत दीदी, ये दीदी 3000 का करवाई थी और जैसे 4000 हुआ इनका खट से मैसेज आ गया। तो मेरा भैया 3700 हुआ था, तो उसी दिन मैं अपने लड़के से बोली, मेरे लड़के ने भी अप्लाई कर दिया। और मेरा तो हो सकता है कि भैया 3-4 घंटे के अंदर ही आ गया था सब मैसेज। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा अच्छा। चैनल 15 साल पुराना है, बट आप वीडियो थोड़ी ना डाल रहे थे भैया। आपकी आईडी 15 साल पुरानी है, चैनल थोड़ी ना 15 साल पुराना है। अकाउंट ये चंदा की गीत सिस्टर अकाउंट लोगों का मतलब मैं नहीं समझी। उसमें तो मैसेज आ रहा है कि वो ऐड करने के लिए, लेकिन जब उसको क्लिक कर रही हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जब 4000 पूरा हो जाए तो शायद हो ये। बैंक अकाउंट लोगो लगा कि नहीं? अभी बैंक अकाउंट तो नहीं लगाई हूँ, अभी नहीं लगाई हूँ बैंक अकाउंट। अच्छा ये बताओ चंदा की गीत सिस्टर, क्या पोस्ट ऑफिस का बैंक अकाउंट लगाया जा सकता है? पाठक भैया आप भी बताओ अगर आप सबको जानकारी हो। इसलिए कि ये जो बैंक वाले अकाउंट होते हैं इसमें बहुत घोरम फेरम होता है, एटीएम पे एटीएम सब दुनियादारी सब चलती है और इधर उधर पैसा सब लोग निकाल लेते हैं।
एक फोन आ गया था, क्या पूछ रही थी चंदा की सिस्टर से और भैया से भी? सभी अकाउंट करना है। अच्छा अच्छा SBI, तो SBI का है मेरे पास, SBI है मेरे पास। ठीक ठीक ठीक, SBI ही करूँगी। उसमें क्या है, एक बार मेरे लड़के ने SBI वाले अकाउंट को इसलिए नहीं करना चाह रही थी। गुड नाइट भैया जी, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, आप आए और इतना कीमती समय दिए, अपना आप ट्रेवल्स कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है इतना कीमती समय दिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद दीदी जी। ठीक है दीदी जी, बाय बाय दीदी जी। उसमें पैसा नहीं कटता। क्या एक बार जो है ऐसे मैसेज आया था पेटीएम पर, और मेरे लड़के ने उसको क्लिक कर दिया, उसमें 500 का लोन हो गया था SBI वाले अकाउंट में। तो 500 रुपये लिया था और उसमें धीरे धीरे करके 2000 रुपया जमा भी कर दिया। उसके बाद भी अभी मेरे ऊपर इस समय मैसेज आ रहा है 4-5 हज़ार रुपये का लोन है। अब उसको कैसे हटाया जाए, जितना बोलते हैं इधर से पैसा कई बार डाला गया, तो इसीलिए मैं उसमें पैसा वैसा डाल ही नहीं रही हूँ। अब सोच रही हूँ कि बैंक से जाकर वहीं से जो हो अपना एक बार में पैसा वैसा डाल के सिस्टम अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक, पता नहीं क्या है, मेरे समझ में नहीं आता है ये सब बात। तो इसीलिए मैं सोच रही थी पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट दे दूं क्या। अब मैं इसी वजह से मैं बैंक में पैसा रखती नहीं हूँ, उसमें है पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खुलवाई हूँ, उसी में रखती हूँ। अब तो पोस्ट ऑफिस में भी सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, नहीं पहले विड्रॉल करो तभी पैसा निकलता था। अच्छा, उसमें पैसा नहीं कटता। चलो ठीक है, SBI वाला ही दूंगी। मेरा मेन SBI वाला अकाउंट जो है वो मेरा पेमेंट अकाउंट ही है। आनंद शुक्ला साइबर क्राइम में का साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दो। अच्छा, साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दूं। अच्छा अच्छा, हाँ हमको नहीं पता है भाई, दो ही बार इसे धीरे धीरे करके कहीं इतना डाल दो इतना डाल दो, तो ना कहीं कहीं 2000 हो गया है, एक बार कहीं 2000 हो गया है और 1000 डाल दो तो तुम्हारा सब सिस्टम ठीक कर दे, तो हम डाल दें ना 1200 रुपया डाले रहें। ओके, बाद फिर कुछ दिन बाद बताएं कि तुम्हारा 2000 हो गया है, फिर मैसेज आवा तुम्हारा 4000 हो गया है। तो एक बार तो आए रहा तब उठाए रहे, तो हम कहे भैया आपके 500 का 4000 हो गया, तो हमने आपको 2000 हमने आपको 2000 दिया है, हमारे 2000 का तो फिर वो 8000 हो गया होगा। हाँ, इसे बढ़ते जाता है, मेरे को समझ में नहीं। हम सोचे कि जाए संग्रामगढ़ में अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट, तो हम सोचे बैंक से शायद होए। ऐसे अनजाने में जब अंकित की शादी रही वही टाइम पर ऐसे कोनो मैसेज आ रहा, मैसेज क्लिक कर दो, 500 रुपया कोनो यूज भी नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका बहन, आपका स्वागत है मेरी लाइव में, मेरी प्यारी बहन। दिख गया दीदी जी, सादर प्रणाम दीदी जी, आशा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी लाइव में आए दीदी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। दीदी कई दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन ये लाइव के चक्कर में बात नहीं कर पा रही हूँ। किसी दिन फोन करो। दीदी मेरा कमेंट नहीं आ रहा है बहन अंशिका बहन, मैं नाम नहीं ली, मैं प्यारी बहन बोल दी थी, आ रहा है, ऑन करके रख दीजिए, आप अपना भोजन बनाइए अंशिका बहन।
आशा दीदी आपका भी आ रहा है, चंदा सिस्टर आपका भी आ रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं सिर्फ बहन बहन बोल देती हूँ ना, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। बाय बाय अनंत शुक्ला भैया। अरे दीदी आजकल यही लाइव के चक्कर में, लाइव के भाग दौड़ में नहीं आ पा रही हूँ। कभी कभी आ जाती हूँ बस दीदी। अब 1-2 दिन में मोनो होने वाला, उसके बाद आऊंगी चैनल पर। जब मैं लाइव नहीं करती थी दीदी, तो मैं जितने लोगों को सब्सक्राइब की हूँ सबके चैनल पर जाती थी। मेरा एक नियम था, खाना वाना खा के जब सब लोग चले जाते थे तो लेटती थी, उसके बाद जितने लोग रहते थे सबका सुनती थी और फुल वॉच करती थी। अब इस टाइम चैनल पर जा ही नहीं पा रही हूँ दीदी। कभी कभी आ जाती हूँ। राधे राधे रिंकू भाई, राधे राधे। कहाँ आहा रिंकू इस समय? चला अब हम ई सब बात अब लाइव मना करब, हम सुबह आपसे बात करब। जो भी भाई बहन मुझे नए हैं फिर हमारे घर आइए। दीदी मैं किसी के लाइव में ज्यादा नहीं जाती हूँ, सब पुराने लोग ही हैं, ज्यादा लोग नहीं आते मेरी लाइव में। जो है सब बस वही 3-4 लोग आते हैं। अच्छा भोपाल में हो? अच्छा अच्छा भाई। राम राम दीदी जी, राम राम। आशा दीदी जी राम राम। इंदु दीदी जी धन्यवाद। हाँ दीदी मैं वही बोल रही हूँ कि सब इसमें जो इसमें कोई नया नहीं है, ये सब सपोर्ट आईडी लगी हुई है दीदी। मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ में ज्यादा लोग नहीं आते हैं, और जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ दीदी खाना वाना हो गया है। खाना खा के नीचे लड़का पढ़ाई कर रहा था, तो मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ। एक दरी बिछा के वैसे छत पर लेट गई हूँ, और लेटे लेटे आप सबसे बातें कर रही हूँ। हर हर महादेव दीदी जी, हर हर महादेव। दीदी सब लोग, कुछ लोग ऑन करके रख दिए हैं, और ये जो है इंदू के गीत वाला जो चल रहा है, इसमें ऑटो क्लिकर लगा है तो कोई सुनेगा है नहीं। कई दिनों से दीदी आपसे बात करने को सोच रहे हो, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता। एक तो इधर तीज त्योहार भी चल रहा है, और ऊपर से दिन भर के लाइफ का चक्कर जो रहता है। अच्छा अच्छा, कहाँ मुंबई में हो क्या दीदी इस समय? अच्छा अच्छा दीदी, बोल रहे हो कि मुंबई में हो कि यही गांव में ही बैठाई हो? आशा दीदी मुंबई में हो इस समय कि यहाँ जौनपुर में ही बैठाई हो? गणेश जी की पूजा चल रही है।
ठीक है दीदी, मैं कल फोन करूंगी आपके पास। सोच में कई दिनों से रही हूँ, लेकिन कल मैं समय निकाल कर, अभी मेरे एक भाई का फोन आया था, मेरे बड़े भाई का, अपने भाई से भी बात करूंगी और आपसे भी करूंगी। अच्छा अच्छा दीदी, हाँ आप बताइए कि गणपति बैठे हुए, तभी मैं समझ गई कि गणपति वाला गणपति वाला त्योहार मुंबई में ज्यादा लोग मनाते हैं, अब तो हर जगह मनाने लग गए हैं। चलो ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, कल आपसे बात करूंगी फिर। एक तुलसी बहन और एक पूनम मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कई दिनों से दीदी मेरा जो है, अब ये सब बातें कल फोन पर करूंगी दीदी, अब लाइव में ये सब बातें करनी ठीक नहीं है। बच्चे तो आपके वहीं रहते हैं ना दीदी, मुंबई में ही? अरे ठीक है सुमन बहन, ठीक है, कोई बात नहीं। सादर प्रणाम दीदी जी, बाय बाय, शुभ रात्रि दीदी जी। शुभ रात्रि दीदी जी, शुभ रात्रि। सादर प्रणाम दीदी जी।
जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दासी मैं तोरा। थैंक यू दीदी जी, रमो दीदी धन्यवाद, इंदु दीदी धन्यवाद, सुमन बहन धन्यवाद, अंशिका बहन धन्यवाद, और मैं जिस बहन का नाम न ली हूँ उनको और भी धन्यवाद। अपनी त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा।
राम राम सुमन बहन, राम राम। अच्छा, रात में 10 बजे भी करती हो क्या बहन? रात वाली में तो नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि रात में मेरी खुद की चलती रहती है, ऑन करके रख देती हूँ, सुबह तक चलती है। 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चलती रहती है। शाम को 5 बजे ही आऊंगी बहन। कल मैं 5 बजे आ जाऊंगी और 5 से 6 1 घंटे में आपको 2 घंटे का सपोर्ट कर दूंगी। राम राम बहन, राम राम। सुमन बहन, एक काम करना, मेरे अवधि वाले पे कमेंट कर देना, तो जो मेरी और आईडी है उसी कमेंट के माध्यम से आ जाऊंगी। नहीं, अवधि वाले से तो आ जाऊंगी, दूसरी वाले से नहीं आ पाऊंगी। फिर कमेंट पड़ा रहेगा तो उसी कमेंट के माध्यम से आ जाऊंगी। अवधि वाले तो सब्सक्रिप्शन पर जाऊंगी, तुरंत मिल जाएगा। लेटेस्ट वीडियो, आज वाली वीडियो पर कमेंट कर देना। क्या लिखो भैया? अवधि लोगी पूनम त्रिपाठी किसी को जानती हूँ गाना। सुमन बहन, मैं समझी नहीं क्या आप लिखी हो। अवधि लोकगीत पूनम त्रिपाठी किसी को जानती हूँ गाना, मैं समझी नहीं इसका मतलब। किसी को जानती हूँ गाना का मतलब नहीं समझी, फिर से लिख दो। सुमन बहन, मैं समझ नहीं पाई किसी को जानती हूँ गाना वाली बात, फिर से लिख दो। क्या लिखी हो नहीं समझ पाई मैं।
सुमन बहन ये जो लिखी हो अवधि लोकगीत पूनम त्रिपाठी बहन किसी को जानती हो गाना? दूसरी आईडी आपका क्या है बता दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूछ, ये देखो ये सुरों की सरगम 70-72 से कमेंट जा रहा है ना। लाओ इसी से ज्वाइन कर लाओ, तुम्हारा एक नंबर भी बढ़ा दे रही हूँ। ये तो मैं दिमाग ही नहीं लगा पाई कि है इस ज्वाइन। हो सकता है मैं अपने जितनी आईडी है सबसे ज्वाइन की हूँ। सुमन बहन तुम्हारा एक नंबर बढ़ा दी हूँ। बहुत ही प्यारा गणेश जी का भजन।
सुमन दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारी लाइव में स्वागत है दीदी जी। सुमन दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारी लाइव में स्वागत है दीदी जी। लाइक डन कर दो दीदी, आपका हमारी लाइव में स्वागत है। सुमन दीदी लाइक डन कर दो। मिल गया दीदी जी। हाँ दीदी, आपकी 12 बजे लाइव होती है, मैं हमेशा लाइव एक तक मेरी प्यारी बहन। हाँ दीदी, आपकी लाइक मिल गया है दीदी, मैं इसलिए नहीं आ पाती हूँ कि मेरा पूरा होने वाला है और अभी आपको 7 की वॉचिंग शो कर रही होगी। कमेंट नहीं जाएगा, बाकी सपोर्ट बराबर जा रहा है। हाँ मंजू बहन, मुझे पता है मंजू बहन, मेरी अभी मेरे यहाँ लाइट चली गई थी और मैं ऊपर गई, रख के मोबाइल वहीं सो गई थी। मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, तो मुझे लगा कि और 7 की वॉचिंग शो कर रही थी, मुझे लगा कि अब तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, सारे कनेक्शन कट जाएंगे, लेकिन तुरंत लाइट आ गई, जैसे लाइट में लगाई फिर सब लोग उसमें लगे हुए हैं। 6 की वॉचिंग फिर शो कर रही है। राम राम मंजू बहन, अब बहन सो जाओ, आप सब लोग ऐसे मोबाइल ऑन करके सो जाओ। सुमन बहन, मैं आपकी लाइव में इसलिए नहीं आ पाती हूँ कि ये सब बहनें जो मोबाइल लगाई हैं रात में, इन सब की उसी टाइम लाइव रहती है। बाकी मैं देखती हूँ आपकी लाइव जब चलती रहती है, लेकिन बस इसी वजह से नहीं आ पाती हूँ। चलो अब मैं सोने जा रही हूँ बहन, आप सब भी सो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों। सुमन दीदी आप भी सो जाइए, मंजू बहन आप भी सो जाइए, मोबाइल ऑन कर दीजिए और सो जाइए। सुबह मिलूंगी आप सबसे, अब मैं भी सोने जा रही हूँ।